स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिपेयर बाय जीनियस में। चलिए आज हम होंडा एसपी साइन में ये स्विच को लगाते हैं जो लाइट को डायरेक्ट ऑन रहता है। उस लाइट को हम स्विच की मदद से बंद करेंगे, जो रात के में चलने समय चालू कर सकते हैं, दिन में बंद कर देंगे। इसमें बैटरी की समस्या भी आती है चार्जिंग में। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले हम वाइजर को खोल लेंगे। वाइजर खोलने के बाद हम ये लाइट वाला कपलर को निकाल लेंगे। उसके बाद हम वाइजर को गाड़ी से हटा देंगे। उसके बाद हम कनेक्शन को करेंगे स्विच के साथ।
अब वायरिंग करते हैं। तो वायरिंग करने के लिए पहले इस ब्राउन तार को स्विच के एक तार से जोड़ेंगे और दूसरा स्विच के तार को इग्निशन स्विच के तार में डाल देंगे। इसमें हम बल्ब भी थोड़ा ज़्यादा पावर का लगा रहे हैं। ये है पत्ता वाला 12 वोल्ट 45 वाट का। इसमें थोड़ा लाइट का भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हेडलाइट में फिट करते हैं, इसको जला के देखते हैं।